Namaskar दोस्तों, welcome to Stocks Screamer where we leverage technology to make investment worthy stocks scream into your ears loud and clear। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं how to find out top 50 इंडियन कंपनीज within 3 minutes। 3 मिनट के भीतर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, डिस्क्लेमर है, डू नॉट ट्रीट दिस वीडियो एज एनी स्टॉक tip. This is strictly for educating the Indian masses about financial world in general and stock markets in particular. Let's get in, find out India's top 50 companies by market capitalization. To achieve this, we'll go to website which is screener.in. So ये हम लोग आ गए हैं screener.in पे and we'll go to screens here. Now we'll create a screen. This is the area where you need to write your query. So our today's query is quite simple, which is market cap and it should be greater than some value. So I guess India के top 50 companies का market capitalization at least 50,000 crore होना ही चाहिए. So I'll type in 50,000 and the values are in crores. So I'll run this query and we got 150 results. तो इंडिया में 150 ऐसी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा है. नाउ इन 150 में से हम लोगों को टॉप 50 कंपनीज चाहिए, तो विल sort this list by market cap. We will click here and this list has been sorted. So as we can see, Reliance Industries का market capitalization number 1 पे है, followed by TCS and HDFC Bank, and the list goes on. Now you can export this list by clicking here, but it will ask for premium account, which I do not have. So I'll go back and I'll select everything and we'll paste this data into our friend Excel. यहाँ पे मैंने paste कर लिया. एंड नाउ हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि लोएस्ट पीई पे ट्रेड कर रही हैं. इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बाय मार्केट कैप विच आर ट्रेडिंग एट लोएस्ट पी. व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट अप्लाई अ फिल्टर हियर एंड देन सॉर्ट दिस लिस्ट बाय पी गोइंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ये हमारी लिस्ट निकल के आ रही है, IOCL, ONGC एंड देन अडानी पावर, कोल इंडिया एंड द लिस्ट गोज ऑन. सो ये कोई स्टॉक टिप नहीं था. This was just to tell you how you can leverage technology to find out companies that you feel are investment worthy. That is it from my side for today. Keep learning, and if you find this content useful and if you want me to feed you with similar content in future, do consider subscribing to our channel. Thank you.